Honorable members, a very good morning to all of you. I welcome you all to the 36th National Youth Parliament session, and I hope this session will be fruitful. We begin the session with an oath or affirmation from our newly elected members. Secretary General, please. Mr. Mokshit, who stands elected from the Bangalore South constituency of Karnataka, will now take the oath of affirmation. Mr. Mokshit, would you like to take the oath of affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Kannada, please. ಎಸ್.ಎಂ. ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಯುವ ಸಂಸದ್ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹಾಗೂ ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Honorable members, as a speaker of this youth parliament, I rise to pay tribute to the late Shri Ratan Tata, one of India's most valued industrialists and philanthropists, who left us on the 9th of October 2024. His legacy spans over decades of transformative leadership, global expansion, and unwavering commitment to societal betterment. उन्होंने देश की सेवा की, न केवल कॉर्पोरेट सफलता से, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण उत्थान सिद्धियों के माध्यम से. इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया. Despite his achievements, he remained grounded, leaving behind a legacy of integrity, courage, and service. May his soul rest in peace, and may his values continue to inspire generations to come. Honorable Speaker, Madam, today the nation bows its head in grief and gratitude as we remember Sir Ratan Tata, a man who dedicated his life to the service of India, not just through business but through humanity. He was not merely an industrialist, he was a dreamer who turned ideas into institutions. He gave India cars that became symbols of self-reliance, and he gave the world a glimpse of Indian excellence. Whether it was rebuilding lives after a disaster or empowering the marginalized, Sir Ratan Tata always stood where India needed him most. India mourns, but India also celebrates a life lived with purpose. Let us pledge to honor his memory by committing ourselves to building a just, inclusive, and progressive India, the very India that Sir Ratan Tata worked for. May his soul rest in eternal peace. Jai Hind. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम भारी मन के साथ खड़े हैं सर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए. उनका जीवन सादगी, नेतृत्व और मानवता की मिसाल रहा है. उनकी सोच, उद्देश्य केवल लाभ नहीं, समाज की सेवा भी है. हम उनके योगदान, विनम्रता और दूरदर्शिता का सदा स्मरण करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्र ने एक सच्चा कर्मयोगी खो दिया, एक सच्चा कर्मयोगी खो दिया. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. The House may now stand in silence to express our deep sorrow. The House may please be seated. Secretary General to convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, Madam.
Let us now move on to the next item on the list of business, the introduction of new ministers. Prime Minister to introduce new ministers. Honorable Speaker, Madam, I take immense pleasure in introducing to you and through you to the House my colleagues, the new ministers. Shri Manoj Shinde, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports. Ms. Shubhangi, Honorable Minister for Labour and Employment. And Ms. Arya, Honorable Minister for Information and Broadcasting. Proceeding on to the next item on the list of business, the question hour. Question number 101, Ms. Joyshri. मैं खड़ी हूँ आज मणिपुर की बात कहने के लिए। न्याय की मांग है, आज सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या कदम उठाएंगे आप? शांति और स्थिरता लाने के लिए क्या योजना है आपके पास? Honorable Speaker, Madam, today we gather here to discuss a matter of utmost importance, the situation in Manipur. Like a festering wound, the issue has been lingering for far too long, and it's high time we take a concrete step to address it. The people of Manipur are crying for justice, for peace, and for stability. Their voices echo of a desperate plea, a reminder that we must act swiftly to prevent the further suffering of people in Manipur. Honorable Speaker, I want to ask our Honorable Home Minister, why the delay? क्या सरकार की निष्क्रियता मणिपुर को आग में झोंक देगी? माननीय गृह मंत्री के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया और उन्हें लगता है मणिपुर की आग अपने आप ही बुझ जाएगी। Honorable Minister of Home Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश का कोई कोना जलता है तो सिर्फ वहाँ की मिट्टी नहीं जलती, वहाँ की माँओं की ममता, बच्चों का भविष्य और देश की आत्मा भी झुलसती है। When one part of India bleeds, the entire nation bleeds with it. मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत के उत्तर पूर्व का हृदय है। मान्यवर, जो पीड़ा प्रश्नकर्ता ने व्यक्त की है वो गंभीर है और हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार मौन नहीं है, सरकार निष्क्रिय नहीं है। सरकार युद्ध स्तर पर 10,000 से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर चुकी है। मैं दोहरा दूं, अगर विपक्ष के नेताओं को सुनाई ना दिया हो, 10,000। साथ ही नाइट कर्फ्यूज, माइन स्वीपर्स और इंटरनेट शटडाउन जैसे कदम उठाए गए ताकि अफवाहें और उकसाने वाले तत्वों पर नियंत्रण पाया जा सके। 320 से अधिक रिलीफ कैंप्स में खाना, दवाइयाँ, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध है। संवेदनशील एरियाज में जीपीएस ट्रैकिंग के साथ ड्रोन्स और यूएवी से मॉनिटरिंग शुरू की गई है। We are directly monitoring the situation in coordination with the state government. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीति से ऊपर उठकर सेवा का वक्त है। मणिपुर की आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, ना कि पेट्रोल। This is the time to douse the fire with unity, not to ignite it with politics. केंद्र सरकार मणिपुर के साथ थी, है और रहेगी। Any supplementary questions? Ms. Leja. जलते घर पिछड़े लोग, ये कैसी आग, ये कैसा रोग? मणिपुर में अमर इतिहास, फिर कब होगा प्रेम का आगाज? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सवाल उठाना चाहती हूँ कि जहाँ कुकी डोमिनेटेड एरिया है वहाँ मैतेई नहीं जा सकते, और जहाँ मैतेई डोमिनेटेड एरिया है वहाँ कुकी नहीं जा सकते। एक स्टेट के अंदर इंडिया पाकिस्तान जैसी स्थिति बन गई है। मैं मणिपुरी हूँ, लेकिन मणिपुर में हर जगह नहीं जा सकती, तो ये कैसा लोकतंत्र है? Madam Speaker, the nation wants to know what measures are being taken to prevent the situation from escalating into civil war and save our women who are suffering in silence. मणिपुर की धरती हुई लहूलुहान, बहनों की इज्जत सरेआम हुई नीलाम। कहा गया कानून, कहा गई सरकार, जब बेटियों पर हुआ ये अत्याचार बार बार।
Honorable Minister of Home Affairs. In coordination with the state government has deployed over 36,000 troops. I repeat, 36,000 troops. Buffer zones have been created between Meitei and Kuki dominated areas to prevent cross-community clashes to ensure civilian safety, and peace talks are ongoing. Honorable Speaker, Madam, this government believes that every woman who has suffered must receive justice in collaboration with NGOs and National Commission for Women. Trauma counseling and legal aid cells have been established to ensure no woman is left unheard or unsupported. As Mahatma Gandhi once said, the day women can walk freely on the roads at night, that day we can say that India has achieved independence. To conclude, Madam Speaker, this government of India will continue to act firmly, fairly and fearlessly until every woman in Manipur feels protected, every family feels secure and every voice of pain is heard and answered. It's about securing real gains for the nation. Honorable Speaker Madam, G20 के होस्ट होने के बावजूद, हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बावजूद, दशकों पुरानी दोस्ती को एकदम ताक पे रखकर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करा देना, भारत से अमेरिका इंपोर्ट होने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाना, रशिया से इंपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोलियम पर पेनल्टी लगाना और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करना. This tariff war is indeed a massive failure of India's foreign policy. पूछना चाहती हूं मैं इस सरकार से कि कहां है भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी. Honorable Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker Madam, I appreciate the honorable members' observations. लेकिन भारत की विदेश नीति माइक्रोस्कोप से नहीं टेलीस्कोप से देखी जाती है. It is not judged by one headline or one handshake, but with long-term national gains. Yes, India has hosted the G20 summit. Yes, we are emerging as the voice of the global south. लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल यह है कि हमने कैसे जवाब दिया. And I assure this house that we have responded not with submission but with strategy. US के साथ FTA पर समझौता ना करके, उनके आगे घुटने ना टेक के, हमने अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों की रक्षा की है, क्योंकि हमारे किसान हमारे विकसित भारत के सपने का एक मुख्य स्तंभ है. Where tariffs were imposed, we engaged. Where penalties were threatened, we negotiated. As for the Indian students in America, प्रभावित छात्रों की सहायता करने के लिए लीगल एड और काउंसलिंग सर्विसेज दी जा रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये छात्र मात्र संख्याएं नहीं बल्कि हमारे बच्चे और हमारे भविष्य है. As for the Russian oil imports, our stand remains firm. No external pressure, no dictative choices. Our diplomacy is guided by realism, not rhetoric. In fact, what we are witnessing today is the redefinition of India's foreign policy, from reactive to proactive, from hesitant to confident, and from balancing to leading. Thank you. Utsav. Honorable Speaker, Madam, today I rise not just as a parliamentarian, I rise as the voice of every woman that was silenced before she could scream. जिस देश में नारी को पूजा जाता है, उसी देश की सड़क पर से छेड़ा जाता है. जब चुप रहती है तो दबा दी जाती है और कुछ बोले तो बदनाम कर दी जाती है. Honorable members, there are many cases like Manipur, Bengal and Ujjain. कितने दुख की बात है, जहां महाकाल को पूजा जाता है वहीं रावण का रूप दिख जाता है. According to the recent NCRB reports, there are over 2.5 lakh crime reported annually against women. क्या सत्ताधारी पार्टी ये बताएगी करोड़ों का निर्भया फंड कहां है? Why are there 140 plus districts without a single women crisis center? Why do minor rape के survivors wait years for justice under POCSO Act?
कहता हूं मैं आज, हमें ना ताज चाहिए ना तालियां, हमें वो देश चाहिए जहां सुरक्षित रहे हमारी दुलारियां। न्याय नहीं तो नारा भी नहीं। So I ask again, does the government want to protect women or just protect their party's image of protecting women? Because if Beti can't live with dignity, you have no right to say Beti Bachao. Say the truth that we have failed our daughters. हमने अपनी बेटियों को निराश किया है। Honorable. वह केवल उनकी चिंताएं ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। Crimes against women is a harsh reality and we are not here to deny it. We are here to fight it. 4,430 crores are sanctioned and are utilized by many Sakhi one-stop centers, 700 plus women help desks across police stations. On POCSO delays, the House is already informed about 1,023 fast-track courts, out of which 731 are already active. Honorable member, you asked where the fund is. It is in the healing of those who survived, but justice that followed. आपने कहा क्राइम बढ़ रहे हैं, मैं यह कहूँगी कि रिपोर्टिंग बढ़ रही है, क्योंकि महिलाएं अब चुप नहीं बैठ रही, वे उनके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। Honorable member, safety is not charity. It's our constitutional right. So no justice, no siren. Honorable member, you asked where the fund is. It is in the healing of those who survived, but justice that followed. If your concern is genuine, then walk with us. क्योंकि जब हम साथ चलेंगे तो बेटियां दौड़ेंगी। धन्यवाद। Madam, I would like to ask a question to the Minister of Women and Child Development. ऐसे तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के नारे लगाते हैं, but as per the civil registration system report, Bihar's child sex ratio at birth has dropped from 964 in 2020 to 891 in 2022. That is, for every 1,000 boys, there are 109 girls missing. Where are those girls? तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस समस्या को रोकने के लिए कोई सख्त कार्रवाई कर रही है, खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और PCPNDT कानून के तहत? If yes, the details thereof. If no, the reasons why. Honorable Minister of Women and Child Development, please. Honorable Speaker, Madam. Concerned about the alarming decline seen in states like Bihar and UP. बहुत दुख होता है ये सोचकर कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो कल कैसे होगा? But as per Global Gender Gap Index, GGGI, India scored slightly improved from 0.665 in 2018 to 0.668 in 2020. To improve our standing, our ministry has taken strong and practical steps. PCPNDT Act को strictly enforce किया गया है। Schemes जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जमीन पर उतारा गया है। लड़कियों के लिए योजनाएं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्थ इनिशिएटिव एक्टिव किए गए हैं। 2023 के ये आंकड़े भी साबित करते हैं कि हमने सिर्फ वादे ही नहीं किए, काम भी किए हैं। So it is just not a coincidence. It is a result of consistent effort and community engagement. Thank you. Question number 104, Ms. Yukti. Not just with a question, but with the voice of millions of broken dreams echoing from Bharat's classroom. On one hand, lakhs of students burn the midnight oil, preparing for years for competitive exams like NEET, UGC, NET. But on the other hand, question papers get leaked like WhatsApp forwards, shattering careers overnight. Madam, is made now for sale. क्या अब मेहनत से नहीं, संपर्कों से परीक्षा पास होती है? जो रात भर जागे थे वह हार गए, जिनके पास लिंक था वह पार हो गए. And now, even Kendriya Vidyalayas, once considered the golden standard of public education, is facing an existential crisis in enrollment statistics. Enrollment has fallen by 28%, lowest in 5 years. Meanwhile, coaching empires में नामांकन की संख्या आसमान छू रही है और वही संख्या हमारे विद्यालयों में कम होती जा रही है. जी हाँ महोदया, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे विद्यालयों में कम हो रही है. क्रिटिकल थिंकिंग वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं.
इतनी योजनाएं फिर भी स्कूलों में सन्नाटा, लगता है बच्चे नहीं पोस्टर पढ़ रहे हैं पाठशाला। Ms. Yukti, this is a questioner. Please conclude. जी मैडम। Honorable Education Minister, you speak of digital India, smart classrooms and NEP reforms. But how do you justify these on grounds? What steps are you taking to ensure this? We demand not excuses, but execution. Sincerely thank the honorable member of opposition for raising these vital concerns regarding the state of education. मैडम, अधूरी तस्वीर दिखाकर पूरा सच छुपाया नहीं जा सकता। पेपर लीक्स आर नॉट mere incidents but betrayals of trust. Hence the matter was handed over to CBI and NTA is under review, not for the drama or headlines but for the timely justice. But let me remind you, जो व्यवस्था अर्जुन को विजेता बनाए वो एकलव्य के सपने भी बचाए, ये है नई नीति का वादा। The SCR 2024 report shows learning gaps, which has rightly alarmed us. But madam, that's exactly why the government has launched Nipun Bharat, ensuring that every child achieves foundational literacy and numeracy by 2027. PM Shri School Initiative, over 14,500 plus institutions. I may repeat, over 14,500 plus institutions, turning schools into models of inclusive and joyful learning. And let's not forget NEP 2020, the most ambitious and visionary reforms in decades, moving on from rote to real learning, from marks to meaning. Now, as for the concerns about Kendra Vidyalaya, so let me be crystal clear. KVs are and will continue to remain the gold standard of public education in India. They are the pride of Bharat. KV सिर्फ इमारत नहीं, विचार है, और उस विचार में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है. Hence, in the response, our ministry has approved 85 new KVs and sanctioned rupees 5,800 crores for KVS financial commitment. Abolished the admission quotas and has revised the admission policies. The aim is not to fill the classrooms blindly, but to ensure that every child receives focused and future-ready education. You ask, is the ground reality changing? We say yes. Platforms like Swayam and Diksha are empowering rural and underprivileged students with free quality education. But also, let me assure this house, we are not Gandharis with blindfolds. This is not a government of excuses. नारे नहीं, नतीजे बोलेंगे. संकल्प से सिद्धि तक यात्रा जारी है. धन्यवाद. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, आज मैं इस सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहती हूँ. मैडम, जब एक बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो वह उसे पढ़ने नहीं आता, वह कई सपने लेकर आता है. लेकिन यह समाज, माता पिता, शिक्षक और यह एजुकेशन सिस्टम सब मिलकर नंबरों की चक्की में पीस डालते हैं. सही बात है. मैडम, बच्चों को डर लगता है अपनी माता पिता से, अपनी शिक्षकों से कि अगर वह 90+ मार्क्स लेकर नहीं आए तो वह नाकामयाब कहलाएंगे. एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल कई मासूम बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं. मैं सरकार से यह सवाल करती हूँ कि बढ़ते हुए सुसाइड केसेस को कम करके सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है. मैडम, हमें खोखले भाषण नहीं सुनने, हमें जवाब चाहिए, जवाब. Honorable Minister of Education, please. नाचौर्हार्यं नाच राजहार्यं ना भ्रातृभाज्यं नाच भारकारी वयै कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम. Honorable Speaker Madam, the new dreams of New India belong to our youth. At the very outset, I need to assure you that this government stands like a rock behind every student, every dreamer and every rising star of India. So let me say this loud and clear in the house that mental health is not a policy issue. It's our moral responsibility. In the response, we undertook the launch of Manodarpan and 24/7 toll-free helpline number under NEP and integration with National Suicide Prevention Strategy 2022 to provide counseling, psychological support and stress management, because mental health is not a luxury, it's a necessity. We are introducing flexible grading systems, supplementary exams and 2 board exams to reduce stress. We emphasize that
the youth are not just students. They are the architects, the Shilpkar of India's future. Their mental well-being is the highest priority. We are here to protect spirits, nurture dreams, and ensure that every young Indian rises undaunted and unstoppable. Thank you. Question number 105, Ms. Sejal. Honorable Speaker, Madam, and the members of the House. Language is not just a tool of communication. It's identity, a culture and an emotion that binds communities together. India is not a monolingual country. It's a federation of diverse culture. And each culture has its own voice, its own language. Our constitution gives equal rights to all the languages under the 8th schedule. Then why is Hindi being pushed as the national language when there is no such legal provision? Is this not an imposition on the linguistic rights and identities of other Indian citizens? Let me take you to the ground reality. A Kannada-speaking driver is beaten brutally in a Marathi-speaking area, whereas a Hindi-speaking person is assaulted in Karnataka. In a country as diverse as ours, is it right to promote one language at the cost of another? Are we building bridges or burning them? What unity are we talking about when a language becomes a weapon instead of a bridge? Honorable Minister of Parliamentary Affairs, please. Honorable Speaker, Madam, the opposition has raised a deeply emotional and sensitive issue. But let me be clear, India is a multilingual democracy and every citizen has the right to speak, work and live freely in any part of the country. Isolated incidents of regional intolerance are unfortunate and should not be projected as national character. Yes, there have been reports of people being harassed over languages, but the solution is not politicizing language. It's promoting understanding. Madam Speaker, under the NEP 2020, our government has ensured, number 1, promotion of regional languages through early education. Number 2, encouraging interstate cultural exchanges through various initiatives, such as Ek Bharat Shresth Bharat program. Number 3, emphasizing national unity through linguistic respects. भाषा कभी तोड़ती नहीं, जोड़ती है. Let us not let the divisive narratives cloud the larger truth. We are one nation with many languages, and each language deserves dignity. This government stands for harmony, not hierarchy in language. Thank you. Any supplementary questions? Question number 106, Mr. Karthik. Thank you, Madam Speaker. इंडिया की परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्रूशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में फैसिलिटीज आउटडेटेड है. इंडिया की पेरिस ओलंपिक्स परफॉर्मेंस में हो सक्सेस या स्ट्रेस, लेकिन ग्राउंड पर तो अभी भी है इक्विपमेंट्स का मिस. क्या सरकार सिर्फ मेडल्स के बाद ही क्रेडिट लेगी या फिर पहले से ही फ्रेमवर्क पे ध्यान देगी? एथलीट के नाम पे बसती है ताली, पर ग्राउंड रियलिटी में उनकी फंडिंग है खाली. This government ensure that every young athlete from the rural India get the same access as those from as the metro cities. Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, please. अध्यक्ष महोदया, मैं अपने प्रतिपक्ष मित्र का धन्यवाद करता हूं. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम मेडल मिलने के बाद नहीं, मेडल लेने से पहले तैयारी करते हैं. वी हैव लॉन्च टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टू फाइंड बेस्ट एथलीट्स अक्रॉस इंडिया. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संरचना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी और कोचिंग की संख्या बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय को 3,500 करोड़, आई रिपीट 3,500 करोड़ की राशि प्रदान की है. रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में खेलो इंडिया तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं. SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स को आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी कोच से अपग्रेड किया जा रहा है. हर टैलेंटेड प्लेयर, चाहे वो एक गांव से हो या एक शहर से हो, दे मे गेट इक्वल एक्सेस बाय गवर्नमेंट. और अंतिम में मैं इतना कहूँगा, सरकार मेडल से पहले सपने दिखाती है और हर सपने के पीछे कोचिंग, फंडिंग और मेहनत रहती है. मेडल तो सिर्फ मंजिल नहीं, ये तो एक मिसाल है. भारत का हर खिलाड़ी अब सरकार का लाल है. धन्यवाद.
Any supplementary questions? Question number 107, Mr. Karthik. Madam Speaker, my question is to the Honorable Minister of Law and Justice. India faces frequent elections at different levels, leading to high public expenditure, government delays and high administrative strain. तो मेरा प्रश्न है, क्या सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है? Can holding simultaneous Lok Sabha and Vidhan Sabha elections actually ensure better policy continuity and better resource management? इसके साथ ही फेडरलिज्म और राज्यों की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंताएं आई हैं. Has the government addressed any of these concerns? Because at the end of the day, this is not just about syncing our elections, it is about strengthening our democracy without weakening our diversity. Thank you. Honorable Minister of Law and Justice, please. Honorable Speaker, Madam, the idea of one nation, one election aims to streamline the democratic process and reduce the burden on our economy and administration. Currently, India is in election mode every single year, which causes frequent disruption to governance, especially in implementing long-term policies. इस पर चिंतन करने के लिए सरकार ने एक विशेष समिति बनाई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और लीगल स्कॉलर्स शामिल हैं. ये भी जरूरी है कि हम समझें कि इस प्रक्रिया के लिए संवैधानिक संशोधन, राज्यों की सहमति और व्यापक राजनीतिक सहयोग आवश्यक है. This is not just a reform, it is a step towards ending the cycle of constant campaigning and bringing back the focus on real governance. Thank you. Any supplementary questions? Ms. Nishika. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार चाहती है कि जंगल में सिर्फ शेर की दहाड़ गूंजे और बाकी प्राणी हमेशा के लिए खामोश हो जाए? ये प्रणाली तो राष्ट्र दलों को और भी फायदा पहुंचाने और छोटी रीजनल पार्टीज की आवाज को दबा देने की सोची समझी साजिश लगती है. क्या यही लोकतंत्र है? Honorable Minister of Law and Justice, please. Thank you, Madam Speaker. That is a legitimate concern. But we must remember that the elections for Lok Sabha and state assemblies will still remain separate even if held simultaneously. राज्य के मुद्दों पर राज्यों के चुनाव हमेशा के लिए अहम रहेंगे और छोटी पार्टियों को अपना प्रचार करने का पूरा अवसर मिलेगा. It cuts the clutter, sharpens the narrative and gives every party a fair shot at making their voice heard. Thank you. The House shall now proceed on to the next item on the list of business, the breach of privilege. I rise on a matter of serious breach of privilege. It is alleged that a confidential government report on a pending bill was published in the media before being tabled in Parliament. The report contains sensitive data, thereby breaching the privilege of this House. How did they access it? And now I have requested you kindly allow me to raise a question now. Ms. Tanishka, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with newspaper cuttings and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I gave notice of it at 10 a.m. today, Madam Speaker, and I kindly request you forward it to the Privileges Committee. Thank you. The notice, when received, will be examined. If the member wishes, it shall be taken up as per the rules. We shall now move on to the next item on the list of business, the papers to be laid. Honorable Finance Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to lay papers on table. Honorable Minister of Finance to lay the papers on the table. A copy of the Economic Survey 2024-25 along with the statistical appendix, Hindi and English version. Report of the Comptroller and Auditor General, Union Government, Finance and Communication, complete audit for the year ended 31st March 2025. Let us now move on to the next item on the list of business, the message from the Upper House. Secretary General to report the message from the upper chambers of the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament.
Please proceed. Thank you, Madam. In accordance with the provisions of the rules of procedure and conduct of business in the upper chamber of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Secretary General, to lay the papers on the table. The message shall be taken into record. The bill, having been passed by both the houses, shall now be sent to His Excellency, the President, for assent, after which it shall become law. Honorable members, at this stage of the proceeding, I take great pride on the behalf of the House in the welcoming of the foreign delegation from Japan. The high-power delegation arrived on 19th of August on a 5-day visit invited by the Parliament of India. Seated in the special box right now is the Speaker, Yamamoto Tamazaki, the Deputy Speaker, Fumiko Imichi, and the Secretary General, Osamu Dazai of the Japanese Youth Parliament. We also convey our warm greeting through them to government, to Youth Parliament, and the friendly people of Japan. Moving on to the next item in the list of businesses, that is calling attention motion. Ms. Shreya, Mr. Samkit, and Mr. Utsav, please. Honorable Deputy Speaker, Madam, I wish to draw the attention of the House to the matter of urgent importance, the recent Pahalgam attack that shook the nation to the core, challenging our national security. Despite having advanced surveillance systems and ground-level input networks, our intelligence agencies failed to detect the recent planned attack. Why were there no prior alerts? Was it due to lack of coordination between agencies or delay in alert system? Honorable Minister of Defense, please. Honorable Deputy Speaker, Madam, security deployment was planned. Intelligent inputs were active. Our soldiers were stationed at multiple points. This attack unfortunately took place in an isolated area where the timing was unexpected. But immediately, quick reaction teams were activated and the attack was brought to containment. The investigation team has identified the lapses and now the deployment has been doubled. Deputy Speaker, Madam, भारत अपने हर जवान के बलिदान का सम्मान करता है और हर दुश्मन को ये याद रखा कि हम शांति के गीत गाते हैं, लेकिन अपमान का जवाब हम वीर रस में देते हैं। जय हिंद। Mr. Samkit, please. Honorable Deputy Speaker, Madam, I rise today to question India's foreign policy and diplomatic take on the Pahalgam attack. In connection with this, I want to raise the upcoming issue of the unholy China-Pakistan nexus, which is taking place at a center in Pakistan, where Chinese forces are training Pakistani forces. The problem is, we are not just facing China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused together as one military. Honorable Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker, Madam, I rise to apprise this august House of the foreign policy dimension and our response to the Pahalgam terrorist attack and how the foreign policy was handled during Operation Sindoor. It was important for us to send a clear, strong and resolute message. We had to make it apparent about the serious consequences faced. As a result, the steps taken were: Number 1, a day after Operation Sindoor, a cabinet meeting was held and the Indus Water Treaty of 1960 was put into abeyance with immediate effect. Number 2, SAARC visas were cancelled for 3 Pakistani nationals. And number 3, the Atari checkpost was closed with immediate effect.
United Nations Security Council, where Pakistan is a member and India is not at present, in its statement, we have asked them to hold accountable and bring them to justice. And that is exactly what we did through Operation Sindoor. TRF, the resistant front, was twice held responsible for the Pahalgam attack, but Pakistan had defended TRF. I repeat, the TRF was defended by Pakistan, but now it is declared as the global terrorist outfit by the US government, and this is a success of Indian diplomacy. Jai Hind. Mr. Utsav, please. सत्ता पक्ष ने एक खूबसूरत भ्रम फैलाया था। सत्ता पक्ष ने ये खूबसूरत भ्रम फैलाया था, कश्मीर सुरक्षित है, पुनः पर्यटन के लिए पलकें बिछाए हुए है। और इस माया जाल से भ्रमित होकर जब हमारे देश के मासूम देशवासी वहाँ सैलानी बनकर जाते हैं, वहाँ होता क्या है? वहाँ मौत का तांडव रचा जाता है। 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जाता है। शर्म की बात है, ऐसे नामी पर्यटक स्थल पर एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बैसरन घाटी की खूबसूरत वादियों में देश ने, सरकार ने, रक्षा विभाग ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? क्या हमारी सरकार को यह मालूम नहीं था वहां निहत्थे पर्यटक आते हैं? ऐसे में लोग वहां सरकार के भरोसे गए और सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। क्या इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, या रक्षा मंत्री की नहीं है? देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, और इस रुकावट का ऐलान हमारी सेना नहीं करती, हमारे रक्षा मंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री नहीं करते। करता कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या हमारी सरकार सचमुच इतनी कमजोर हो गई है कि भारत के सीमाओं की रक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों होने लगी? ये जंग रुकी क्यों? और वो भी उस मुकाम पर जब दुश्मन के पास हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्या हमारी सरकार सचमुच दंतहीन हो गई है? जब लोहा गर्म था तब चोट क्यों नहीं की गई? जब किस्सा शुरू किया गया था तो खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों नहीं उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया? Honorable Prime Minister, please. Honorable Deputy Speaker, Madam, all of us seated here today belong to one or the other community, one or the other religion, one or the other state, and in the end are from some political party. लेकिन आज इस सदन में मैं अपनी पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ी हूँ। अपनी आवाज से सभी भारतीयों की गूंज को एक स्वर देने खड़ी हूं। एक ऐसा स्वर जो दुखी भी है, क्रोधित भी है, लेकिन डटा हुआ है। जिस तरह निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम की धरती पर आतंकी हमला हुआ, ये केवल एक खौफनाक घटना नहीं थी, यह इंसानियत पर हमला था। ये हमला भारत की आत्मा पर चोट था। दुर्भाग्यवश हमारे पड़ोसी देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ना तो धर्म मानते हैं और ना मानवता, जो आतंक को राजनीति का बनाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से निपटना भारत बखूबी जानता है, क्योंकि सही कहा गया है कि उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, कि उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केसर से। कवि सम्मेलन नहीं है और इसलिए 7 मई 2025 को 22 अप्रैल का बदला हमारी सेना ने निर्धारित लक्ष्यों के साथ 22 मिनट में, मैं दोहराती हूँ 22 मिनट में, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। और आज
पाकिस्तानी आकाओं को नींद नहीं आती। वे जानते हैं कि भारत आएगा और घर में घुस कर मार के जाएगा। ये नए भारत का न्यू नॉर्मल है। यही न्यू नॉर्मल है, यही न्यू नॉर्मल है। I would like to bring to your notice, Honorable Deputy Speaker, Madam, कि यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों में से 190 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का भारत का समर्थन किया है। पर विडंबना तो ये है महोदया कि मेरे देश के पराक्रमी वीरों को विपक्ष का ही समर्थन ना मिल पाया। अध्यक्ष महोदया, देश को भड़काने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष सदैव सेना और देश के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। शब्दवीर नहीं महोदय। ऑनरेबल मेंबर, आप प्लीज बैठ जाइए। प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू। थैंक यू मैडम। विपक्ष का मानना है कि युद्ध थर्ड पार्टी मीडिएशन की वजह से रोक दिया गया। आई रीइटरेट, नो वर्ल्ड लीडर हैज एवर आस्क्ड अस टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द हाउस कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हाल ही में वैतरन घाटी में आतंक मचाने वाले 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया है। हमारे सुरक्षा बल चौकन्ने हैं। हमारी नीति स्पष्ट है और सबसे जरूरी बात, हमारा देश एकजुट है। Our future depends not on what happens to us, but on how we react to it. Terrorists want fear, we will respond with fearlessness. They want chaos, we will answer with unity. And they want hate, we will respond with harmony. क्योंकि भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की नहीं। In conclusion, Madam Speaker, every corner of India, from Kashmir to Kanyakumari, is safe, sovereign, and sacred. And a reminder to everyone in this house कि करो चर्चा और इतनी करो, कि करो चर्चा इतनी करो कि दुश्मन दहशत से लहर उठे। ध्यान रहे पाकिस्तान, मान, सेना और सिंदूर का प्रश्नों में भी अटल रहे। जय हिंद। The House shall now move on to its legislative business. The bill for introduction. Honorable Minister of Civil Aviation to introduce the bill. Honorable Speaker, Madam, I beg to move for leave to introduce the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. Now, the question is whether the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025 be passed. All in favor, please say aye. Aye. All against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Let us proceed on to the next item on the list of business, the bill for consideration. Honorable Minister of Jal Shakti to present the bill for consideration. Honorable Speaker, Madam, I rise to present the Water Amendment Bill 2024, a historic step towards ensuring clean water for all and preventing water pollution for our precious water body. The original Water Act 1974 was enacted to prevent and control water pollution and to maintain or restore the wholesomeness of water. However, the rising challenges of industrial discharge, urban waste, and climate change, it is time that we strengthen our legislation. Now the question is whether the enacting formula and the title of the bill be considered. All in favor, please say aye. Aye. All against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula and the title is taken into consideration. Honorable Minister of Jal Shakti to present the clauses of the bill. Honorable Speaker, Madam, with your permission, I may now read out the important clause of the bill for consideration. This act may be called the Water Amendment Act and shall come into force on such date as the central government may notify it. The term pollution is expanded to include microplastic contamination and pharmaceutical waste. The term stream now includes underground water and wetland. The amendment empowers the central government with CP/CB to develop standardized, possibly digital and consent mechanism for
industries. No industry shall establish any outlet for the discharge of trade without the prior consent of the Pollution Control Board. If any person fails to obey with the provision of this act, shall be punishable with first offence, fine up to 10 lakhs to 1 crore, subsequent offence, imprisonment up to 7 years. Thank you. The bill has been read. The House shall now take up discussion. I request Mr. Ayush to speak. Madam Speaker, I rise today to express serious reservation against the bill. While the intent of the bill is noble and necessary, the government's approach appears rushed, technocentric and detached from grassroots realities. Rural and tribal areas where water pollution is often the most neglected have no real infrastructure support. Instead, we see digital tools like real-time surveillance apps. What about the regions without internet? I highly object on clause number 3 and 4. Is this bill truly inclusive or only for the urban elites? And with excessive power given to the Pollution Control Board, where are the safeguards to prevent misuse against small industries or farmers? For these reasons, I urge this House to reject the bill outright. Honorable Minister of New and Renewable Energy, please. Honorable Speaker, Madam, I support this bill wholeheartedly. India loses over rupees 3 lakh crore annually due to water pollution related health and productivity losses. This bill makes the polluter pays and empowers the citizens. The clauses on real-time monitoring is revolutionary. Jai Hind. Honorable Leader of Opposition, Mr. Anurag, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ सरकार को गलत नहीं ठहराना चाहता, बस सरकार से एक प्रश्न है। हमारे बिल में बहुत सी सेवाओं का वर्णन किया गया है, जैसे जल रक्षा ऐप, सैटेलाइट ट्रैकिंग और भी अन्य सेवाएं। मगर उन छत्तीसगढ़ की महिलाओं का क्या, जिनको आज भी कुएं का मैला पानी पीना पड़ता है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर घर ऐप से पहले हर घर टैप लगवाएं। टैप लगाओ, टैप लगाओ। Honorable Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में एक नेता के रूप में नहीं, अपनी देश की धरती की बेटी और उस नागरिक के रूप में खड़ी हूँ जिसने अपने गांव के तालाब को कूड़ादान बनते देखा है। The opposition says it's hasty. I ask, isn't 50 years of water pollution enough delay? The original 1974 Act has served us well, but today's India needs a new weapon for a new war. And that war is against toxic rivers, chemical effluents, and water mafia. This bill brings teeth to the law. It isn't just a water amendment bill, this is our nation's environmental awakening. Industries polluting rivers will be shut down, not after 2 years, but within 2 days. For the first time, citizens can report water crimes through the Jal Rakshak app. Madam Speaker, this bill also protects the future. It mandates zero liquid discharge. I repeat, zero liquid discharge by 2027 for all red category industries. Is it perfect? No law is, but it is brave, bold, and necessary. To my opposition friends, I say, criticize the gaps, but don't block the first water law reform in 5 decades. And honestly, have a little faith in the government. There is a reason why you are seated on that side of the parliament and we are seated on this side. In conclusion, madam, if not now, then when? If not us, then who? If we do not act today, what would we tell our children tomorrow? I urge this house to stand united for Jal Shakti and Jal Suraksha. Thank you. Now the question is whether clauses 3 and 4 stand part of the bill. All in favor, please say aye. Aye. All against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 3 and 4 stand part of the bill. Honorable Minister of Jal Shakti, to please speak.
I thank the members for their constructive suggestion. Madam Speaker, I request that the bill be passed. Now the question is whether the Water Conservation and Control of Pollution Amendment Bill 2024 be passed. All in favor, please say aye. Aye. All against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Let us now move on to the private member bill. Ms. Soumya, please. Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise to move the following resolution. This House urged the government to consider introducing a policy to provide mandatory menstrual health leave of 2 days per month to all working women in public and private sector. I urge the House to support this important humanitarian measure. Thank you. Honorable Minister of Labour and Employment, please. Implementing such a mandatory leave policy across sectors without due consideration might lead to many problems like employment discrimination. इसलिए मैं विपक्ष के सदस्य से आग्रह करती हूं कि वे इस समय यह प्रस्ताव वापस ले लें और सरकार को सोच समझ के कार्य करने का समय दें। धन्यवाद। The honorable mover may now decide whether she wishes to press or withdraw the resolution. Thank you, Honorable Speaker, Madam. I sincerely thank the government for their assurance and all the members for their engagement. I hereby withdraw my resolution. The resolution is hereby withdrawn. The House is adjourned. It shall assemble again tomorrow at 11 a.m.